Hello students, let's read this question. A magnetic field in a certain region of a space is given by 8.35 into 10 power minus 2 I cap Tesla. A proton is shot into the field with the velocity 2 into 10 power 5 I cap plus 4 into 10 power 5 J cap meter per second, and the protons follows a helical path in this field, and the distance moved by the proton in the x direction during this period of one revolution in yz plane will be, and mass of proton is given by 1.67 into 10 power minus 27 kilogram. So let's find out which distance is covered by that proton in x direction. First thing, magnetic field is equal to 8.35 into 10 power minus 2 I cap Tesla, and V is equal to 2 into 10 power 5 I cap plus 4 into 10 power 5 J cap meter per second. Okay. Further, to find distance moved by proton in YZ plane, सबसे पहले मुझे उसके लिए टाइम निकालना होगा. डिस्टेंस मूविंग के लिए टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm divided by qb. Put all the values. 2 into pi into m 1.67 into 10 power minus 27 divided by 1.6 into 10 power minus 19 into B is here 8.35 into 10 power minus 2. So T is the time period of particle moving in a circular pattern in YZ plane. मूवमेंट ऑफ इन x डायरेक्शन में मूवमेंट, ये YZ प्लेन के अंदर जो टाइम वन रिवोल्यूशन है ये वो हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब मूवमेंट इन x डायरेक्शन जो हमें निकालनी है, द डिस्टेंस बाय मूव्ड बाय प्रोटॉन इन x डायरेक्शन. सो मूवमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू v इंटू x डायरेक्शन इंटू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो चीज हमें निकालनी है. एक्स डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया, कितनी वेलोसिटी है, 2 इंटू 10 पावर 5. ये सारी चीज एज इट इज. 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर minus 27 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर minus 19 into 8.35 into 10 power minus 2. After solving all these system, you get a value 0.157 meter. So distance moved by the proton in x direction during this period of revolution in YZ plane will be 0.157 meter. So our option C is correct. I hope you understood it well. Best of luck.